So that Pareto distribution suggests that if you distribute the entire resource, you take all the resources of the world and you distribute them equally among all the population in this world. Okay. Would that remove inequality perpetually? I mean, would that solve the problem of inequality forever? No, I don't think so. No, why not? I mean, the whole wealth of the world has been equally distributed. Yeah, but then people will become lazy and then they wouldn't do anything themselves. And they used to waste money. There are some people who are so used to working hard that even if you put them without anything, just leave them alone in jungle, they'll find a way to exert themselves and to work hard and find some job for themselves. Okay? And there are some people, no matter how bad their situation is, they'd still find ways or still find excuses of not working. ठीक है, still find an excuse not to work. So Pareto distribution जो है, it sort of says that there is this what was that 80-20 rule or 70-30 rule? I think it was 80-20 rule, that 80% of the wealth in this world is generated by 20% of the people. ठीक है, और उन 20% लोगों में भी within those 20% people, अगर उनकी total wealth ले लें, 80% of that is produced by 20% among that group, and so on. It continues. It does not apply to wealth distribution only. It applies to other forms of. For example, हमारे Western world में the music that has been composed, ठीक है, ये Mozart है, Beethoven है, और हमारे ये music composers हैं. All that we hear from now of that classical music is just 20% of all that was produced. First of all, 80% of the music that is listened to nowadays is produced by just 20% of the composers. Okay. Okay, and so on. So that theory further suggests that if you distribute this wealth, even if you distribute this wealth equally among all the residents of this world, soon they'd return to that Pareto distribution, that it would become that 20% of the people would start owning 20%. Sorry, 20% of the people will start end up owning 80% of the wealth of the society. It would redistribute itself. अच्छा, इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए व्हाट आर योर सजेशंस? कुछ तो आपने वो सॉर्ट ऑफ वो मिक्स से एड्रेस किया था उस वीडियो में, उस प्रॉब्लम को, द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी एंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, राइट? या, ठीक है, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर टू बी डन टू सॉल्व पॉवर्टी, एंड देयर आर perhaps some things which can be done differently to solve inequality. ठीक है, तो inequality, what sort of inequality are we trying to address? Are we trying to redistribute the wealth of the world? Yeah, are we trying to, yeah, should we be trying to redistribute the opportunities that are there in the world so that each person has got equal number of opportunities? Now it's up to them what they make use of it. So wealth की inequality, sorry, wealth की inequality remove करनी है या opportunities की inequality remove करनी है हमने? inequality. Opportunities, wealth. The opportunities. We have to encourage the people. चलो जबरदस्त, ठीक है जी. Let us now start solving the physics questions. And let us assume from where we left yesterday. IGCSE Physics. हम एनर्जी के क्वेश्चंस कर रहे थे, एनर्जी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के, if I remember it right. Yes. 14. The last question that we did was that boulder rolling off the cliff. Yes, that question. View page display, enable scrolling, and do away with margins. Okay, calculate the kinetic energy. Calculate KE of
kg trolley moving at 2 meters per second. Then there is electron bullet moving at 400 meters per second. And then there is 500 kg car moving at 72 kilometers per hour. अच्छा, आपको ज्यादा इरिटेशन तो नहीं होती? मैं फिजिक्स के अलावा आपसे वो दूसरे वर्ड पॉवर्टी ऐसे किस्म के वो इश्यूज डिस्कस करने शुरू हो जाता हूँ. You would rather we just stick to physics? No, I don't have any problem with that. चलो ठीक है. अच्छा, आप ये सॉल्व कर लें, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहा हूँ, तो इसके बाद वो सॉल्व कर लीजिएगा.
Velocity of matrix calculate. वो कौन ये चूजा कौन ये छोटा सा चूजा कौन
ये चूजा चूजे को क्या चाहिए? अच्छा, Asian, kindly let me know when you have solved all 4 of these questions. So we'll discuss all 4 of them together. Okay. जी साहब, बताइए। ये देखो चूजा कौन है? ये देखो ये चूजा कौन है? कौन है चूजा? ये चूजा कौन है? ये देखो ये चूजा कौन है? चूजा चूजा है, ये तो चूजा है। छोटा सा चूजा, छोटा सा चूजा कौन है?
Haji, how many done? I'm on question 3, part D. Mm-hmm.
हाँ जी, कहाँ तक पहुंची है गाड़ी? Question 4. Yes, I'm done. Challenge, let's discuss. ठीक है जी, starting from question 1. For A, I got 2 joules. For B, I got 100,000 joules. No, for B, I got 160 joules. And for C, I got 130. ठीक है, all three are correct. For question 2, I got 20 meters per second. And then I got 150 joules and 300 joules. Correct. Then I got 0.18 joules. 0.18. 0.18. So I'll show you 1.8 joules. It should be yes, 1.8 joules होना चाहिए, ठीक है. 1.8 joules then. And then I got 1.8 joules again. And then I got 6 meters per second. Correct. Then I got 0. ये आप दोबारा करें, मेरे ख्याल से इसमें आपका वो थोड़ा चेंज होने वाला है. Okay. 3D का आप कह रही हैं ना? 0. Yeah. It can't be 0. I mean, if the ball is moving around, it's jumping up or it's rebounding. How could it have what? 0 joules energy. Okay.
Is the answer 0.3 joules? The answer is not 0.3 joules. अच्छा, इसमें हमने ये करना है कि it asks for KE, but the thing is कि we do not have to actually calculate KE in this one. If we try to do it using the formula of KE, I don't think we'd be able to. What is happening over here is that after it rebounds, there is a ball which drops, it hits the ground, and then it rebounds and it reaches a smaller height. ऐसा ही है? Yeah. ठीक है. So what happened is that it had PE over here, which all converted into KE over here. And as it hit the ground, some of this PE, which was converted into KE just before it hit the ground, some of it got lost as it hit the ground in the form of sound and heat energy. Now it has got lesser KE when it goes up. All the KE it had when it got rebound, it will be converted into PE when it reaches the maximum height. Okay, so now if I am to calculate what was the KE at rebound, I have to actually calculate all the PE at the height of second rebound. Okay. Did you get the logic of it? Yeah. Okay. So here KE would be how much? It would be equal to all the changed PE, and that would be equal to what's mass of this ball? Is 0.1 kg. 0.1 times 10 times 1.25, which is the height it reaches the second time it, I mean, after rebound, the maximum height it reaches. So this will be equal to 1.25. Okay. Joules. Okay. And now using this KE, calculate the velocity at the start of this rebound. Okay. Is it 5 meters per second? Is it 5 meters per second? It is. It is. ठीक है जी. Question number 4. For question 4, I got 3.5 times 10 to the power 9 watts. ठीक है. Yeah. ठीक है जी. अच्छा जी, good. अच्छा, next question, next जो हमारे पास discussion है या जो chapter है, it relates to sources of energy and what are the let's say pros and cons of all these different forms of all these different sources of energy. ठीक है. हमारे पास जो energy के sources हैं, they are broadly classified into two main categories. वो categories हमारे पास क्या हैं? One are renewable, the other are non-renewable. ठीक है जी. तो energy sources जो हैं, energy sources, they are classified as renewable, the other are non-renewable. ठीक है. Non-renewable जो हैं, ठीक है. Non-renewable में further हमारे पास कौन सी categories आती हैं? Fossil fuels. Very good. Fossil or nuclear. Okay. ठीक है जी. Renewable में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं? Renewable में we have got solar, then we have got wind,
Then we have got wave. Then we have got tidal and hydroelectric. पाकिस्तान में ज़्यादा कौन सी यूज होती है? रिन्यूएबल में से? नहीं, टोटल हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन है, जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसमें से इन सारी फॉर्म्स में से रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, हम सबसे ज़्यादा कौन सी यूज करते हैं? Hydroelectric. Hydroelectric. Hydroelectric followed by fossil followed by nuclear. ठीक है, ठीक है, ठीक है। एथोपिया में कौन सी यूज होती है? I have no idea. I think it would be fossil and it would be using the Ethiopia produces crude oil, right? They extract crude oil. Ethiopia is in Africa and I guess it would be using the oil. We've got geothermal. Acha, and then we have got biomass. Acha, would you like me to dictate to ya इनकी further description में लिखवा दूँ? Sometimes it's asked, usually a small part of your exam, but I think अगर समझ भी लें तो would be enough. But if you say so, मैं आपको लिखवा देता हूँ. अच्छा, हमारे पास जो पहली चीज है, that is renewable and non-renewable. So how would we define a renewable source of energy and how would a non-renewable source of energy be defined? Renewable energies cannot run out. However, the non-renewable energies will run out someday because they're made up of the remains of the animals and plants. So it takes millions of years. अच्छा, उसके लिए हम लिख लेते हैं कि these cannot be exhausted. Exhausted and are generally non-polluting. Generally non-polluting. ठीक है जी. Non-renewable would be defined as कि once used up, these cannot be replaced. These cannot be replaced. अच्छा, ऐसा करना कि अगले पेज पे डाल लें. Shall we do this together या अलग-अलग कर लें? ठीक है. इनका the main thing that we need to know about all these forms of energy is कि what are the pros and cons. ठीक है. तो अब ये पहले लिख लें फिर आगे बात. या आपने लिख लिया दोनों की डेफिनेशन? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल की. ठीक है जी. नेक्स्ट थिंग वी हैव गॉट इज फॉसिल. फॉसिल्स में हमारे पास कौन सी आती हैं? द मेन वन इज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. ठीक है जी. इट्स कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स इनका पूरा नाम होता है. दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर एक्चुअली दैट ऑयल और दैट गैस, it's generated from all the fossils or all the remains of the carcasses of the creatures which existed ages ago. उनके fossils से ये चीजें बन रही होती हैं. ओके जी. हम इन fossil fuels को burn करते हैं. ठीक है जी. They give off heat energy. That heat energy is then converted into electrical energy. अच्छा, इसका advantages क्या हैं और disadvantages क्या हैं using fossil fuels as a source of energy? They produce a lot of pollution.
That's a disadvantage. ठीक है, they produce pollution or they're expensive because some countries have to import it. ठीक है. अच्छा, इसमें expensive और non-expensive जो है ना, the ones who export it, for them it's not expensive. That's why they're producing it. ठीक है. And then it generates revenue for them as well, besides helping them meet their energy needs. So expensive or non-expensive जो है, that's a relative thing. ठीक है. For the countries which, अच्छा इसमें इस तरह होता है कि कुछ countries की natural endowment है. Natural endowment is, for example, the Middle Eastern countries. They already, I mean, naturally they have a lot of oil beneath their area, so it's less costly for them to dig it out, and that's less costly for them to produce energy using that oil. अच्छा, इसी तरह हमारे पास जहाँ कॉस्ट की डिबेट आती है, there is a concept of economics called economies of scale. Economies of scale में ये होता है कि whenever you do an activity at a massive scale, your average cost reduces. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर पे मार्केट से यू बाय क्लॉथ्स एंड लेट्स से यू बाय द all the stitching material, ठीक है, you buy a sewing machine, you buy thread, and you start sewing your own clothes. So would that be more costly? Cost किसकी ज्यादा पड़ेगी, of the thing that you produce at your home, या a thing, let's say for example, available at in the market at a store, dress available in the market? Which do you think would cost less? The one that you make at your home. हाँ, इस तरह से होता है कि कॉस्ट की जहां तक बात हो रही है, आई एम नॉट necessarily talking about the price at which the dress in the market gets sold, because उसमें तो अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लेते हैं ना. कॉस्ट जो है, the cost to produce would be less for the manufacturer. इसका रीजन ये है कि जब वो रॉ मटेरियल बाय कर रहे होंगे, they would be buying that in bulk. ठीक है, तो it would cost them less. Secondly, they would be hiring labor in tons. Thirdly, those labor day in day out producing clothes make them, let's say, specialists at their jobs, and they would be wasting lesser material. Thirdly, there would be a specialized person for each job, which would further reduce the time it takes to produce that cloth, as well as improve the quality of that cloth. तो कोई भी एक्टिविटी जब मैसिव लेवल पे हो रही हो, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है. ठीक है. Yes, you might save money producing the same thing at your home. The reason is कि आप उनको जो अपनी कॉस्ट के ऊपर वो प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, you're not paying them that profit. ठीक है. You're paying them just the cost that घर पे आपको सिर्फ वो कॉस्ट आ रही है, मार्केट में आपको उनको प्रॉफिट भी देना है. Otherwise, any activity which is happening at a larger scale would generally reduce the average cost. There are other reasons why the cost gets reduced as well. So the reason it relates to what we are discussing over here is कि एनर्जी में जब कॉस्ट की बात आती है, तो a lot of cost, for example, nowadays there is this debate कि आपने जैसे बात की कि fossil fuels हैं, it costs more to produce energy using those fossil fuels. But it might be the case when we start producing energy using, let's say, wind or solar, and we do that at a large enough scale, average cost could get reduced, especially for the countries which are not endowed naturally with crude oil beneath their area, ठीक है, beneath their land. तो उन कंट्रीज में फिर दे आर डूइंग इट एट मैसिव स्केल. थर्डली, दे आर, इसमें एफिशिएंसीज का भी केस आ जाता है कि हाउ एफिशिएंट इज द रिसोर्स. फॉर एग्जांपल, हाउ मच एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाउ मच एनर्जी. ठीक है. तो ये सारी डिबेट. अच्छा, फॉसिल्स के लिए जनरली जो चीजें कि फॉर कंट्रीज व्हिच आर नेचुरली एंडाउड, इट कॉस्ट्स देम लेस. दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस. Historically, human beings, they have been relying on fossils. That's why the technologies that they have developed, and because of economies of scale, the cost of energy producing these fossil fuels is less. ठीक है. Generally, specific cases में it might be different. For some countries it might be different. अच्छा, but the issue is कि they are exhaustible. Number one, what would we do when we run out of these fossil fuels? And the next thing is कि, as you said, कि they produce pollution. These are all the points relating to fossil fuels. Nuclear energy हमारी किस तरह से produce होती है?
don't know if you watch TV shows or not. There was this famous TV show, I think last year or a couple of years back, with the name Chernobyl. आपको चेरनोबिल की हिस्ट्री पता है? इसकी हिस्ट्री? चेरनोबिल, CHERNOBYL. नहीं. ये आज गूगल कीजिएगा, समथिंग इंटरेस्टिंग, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग. हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, दे यूज रेडियो एक्टिव मटेरियल टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में यूजुअली हमारे पास प्लूटोनियम और क्या होता है दूसरा, यूरेनियम, ये हम यूज कर रहे होते हैं. ठीक है जी. वी नो दैट द न्यूक्लियर वेपन्स दे आर एक्सट्रीमली डेडली. ठीक है, they produce a lot of destruction. So they produce a lot of destruction because they produce a lot of energy. ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट ज्यादा या डिस्ट्रक्शन ज्यादा, तभी तो ज्यादा produces a lot of energy. So that same energy, instead of destruction, it could be used for construction or it could be used for creation of electrical energy as well. So the good thing about using nuclear as a fuel, nuclear as a source of energy is that a very small amount produces a lot of energy. Energy dense objects होते हैं या मटेरियल होते हैं कि जिसको हम यूज कर रहे होते हैं. अच्छा, फिर उसमें कुछ कंट्रीज हैं अगेन दैट नेचुरली एंडोर्ड कि उनके पास ये मटेरियल नेचुरली उनके कंट्रीज में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, यूरेनियम प्लूटोनियम जो भी है, तो उनको भी फायदा हो जाएगा. इट वुड कॉस्ट देम लेस टू यूज न्यूक्लियर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. अच्छा, thirdly, it's less, let's say, polluting than the fossil fuel. Fossil fuels की comparatively इसकी जो pollution है, that is less. Okay. But the main disadvantage is that it's extremely, let's say, hazardous to use. First of all, the process in which it's produced, जो उसकी पूरी facility होती है जिसमें ये daily वो produce हो रहा होता है. So what happened at Chernobyl was there was a nuclear plant and there was a blast at that nuclear plant. ठीक है, and the effects of that blast, radioactivity, अगर आपको वो आइडिया हो कि एक्सट्रीमली डेडली ह्यूमंस के लिए इसका जो एक्सपोजर होता है, जितना भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है, इवन जो हमने अपने टेस्ट्स करने होते हैं कि जिसमें हम एक्सरेज या कोई और रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू वेयर स्पेशल क्लोथिंग, वो बाहर वो साइंस लगे हुए होते हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस जो हैं, वो सारी चीजें हम कर रहे होते हैं. अच्छा, तो इन केस ऑफ ए डिजास्टर, it's not contained to that particular site. So the wind carried the radioactive material to Eastern Europe. Chernobyl, Russia में ये blast हुआ था, and even in the let's say Central Europe या Eastern Europe में तो था ही, even till Central Europe या Western Europe, they were able to detect the effects of that nuclear material leakage. ठीक है, इसी तरह around 10 years back, there was this plant in Japan with the name Fukushima. Fukushima. Fukushima was a town, and in that town they faced a tsunami. ठीक है जी. तो सुनामी के बाद having Chernobyl का जो इंसिडेंट हुआ, it was in around 1980, while there was still Soviet Union. It wasn't Russia at that time. अच्छा, तो फुकुशिमा का जो हुआ था, it happened around 10 years back, and immediately having known what would happen in case the disaster spreads, so they evacuated the entire city, और उन्होंने साइट को बड़ा एक्टिवली कंट्रोल करने की वो कोशिश की, एंड दे वर एबल टू मैनेज कि ह्यूमन लॉस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, कि डिजीजेस बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई, ह्यूमन एक्सपोजर जो है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ, but at the cost of that you had to evacuate an entire city. So the thing is it's quite hazardous using nuclear as a source of energy. अच्छा, तो ये हो गया इसकी डाउन साइड. देन कम ये जो आपके हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर है, विंड है, वेव है, टाइडल, जियोथर्मल. अच्छा, इसमें भी अगेन कुछ कंट्रीज जो हैं उनकी ज्योग्राफी ऐसी है कि इट हेल्प्स देम यूजिंग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. पाकिस्तान है, मिडिल ईस्ट है, धूप ही धूप है, आप जितना मर्जी सोलर यूज करें. आप यूरोप में जाते हैं, आप वेस्टर्न यूरोप में जाते हैं, आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर ये जो आपके नॉर्थ पोल या इस किस्म के इलाके हैं, वहां पे लिटिल एक्सपोजर ऑफ सन, तो वहां इट्स समटाइम्स वेरी इनएफिशिएंट टू यूज सोलर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. अच्छा, विंड सेम केस, जिन इलाकों में हवा आपकी ऐसे चलती है, विंड बेल्ट्स आपकी हैं,
वहाँ इट्स क्वाइट एफिशिएंट टू यूज विंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जिन इलाकों में नहीं है वहाँ आप नहीं कर सकते। वेव अगर आपके पास है लेट्स से बीच या सी साइड या सी बेल्ट है तो यू वुड बी एबल टू यूज वेव एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं है तो यू कांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगर आपके पाकिस्तान में तो हमारा वो कंट्रोल ही पूरी वो कंट्री की ज्योग्राफी ऐसी है ना कि अ रिवर रन्स थ्रू द लेंथ ऑफ द एंटायर कंट्री। पाकिस्तान के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट से लेकर सदर्न मोस्ट पार्ट तक देयर इज अ रिवर रनिंग। तो जगह जगह पे हमने उसके उसके फ्लो को यूज करके हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान में सूट करता है। बट व्हाट अबाउट सऊदीया? सऊदीया में तो इस तरह आपके पूरे के रिवर्स रन नहीं कर रहे अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंट्री, या फॉर मैटर दैट एनी अदर कंट्री जिसमें ये चीज नहीं है, तो वहां पे फिर आप ये यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें फिर एक तो हमारी चीज ये हो गई कि नेचुरल ज्योग्राफी जो है वो आपकी सपोर्ट करती है ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर सोर्स को। सेकेंडली, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इनसे एनर्जी जनरेटेड जो है दैट इज यूजुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूजुअली इनएफिशिएंट, एंड सेकेंडली the quantity of energy produced using this solar and wind etc that is quite small as compared to non renewables. अच्छा, this अच्छा, जियोथर्मल में हम जमीन की जो हीट है वो यूज कर रहे होते हैं। बायोमास, बायोमास में हमारी ये जो वेजिटेबल्स और इस तरह क्रॉप्स हैं इनको यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस इसमें इज क्वाइट स्मॉल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई विल डू इज कि I'll send you some notes. It's largely a theoretical topic. आप वो there is this chapter आप बस ये read कर लें तो it would give you enough. I mean, if I were to dictate या आपको इस तरह लिखवाऊंगा तो it would take a lot of time. Simply reading that particular chapter would be enough. उससे आपका काम हो जाएगा। Next class इंशाल्लाह we'll start discussion of pressure और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे फास्ट प्रैक्टिस पे। ऑल राइट, चलें जी, टुडे इज थर्सडे। चलें जी, सी यू कमिंग मंडे देन इंशाल्लाह, सेम टाइम 12 noon। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।